Okay, we are almost there. Okay, you can go ahead, Atul bhai. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત મરાઠી ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના આજના પ્રવચન ગોઈંગ બિયોન્ડ માઇન્ડ ના વક્તા શ્રી નંદકુમાર રાઉતજી, અર્ચના મુનશીજી અને આશા શિંદેજી તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી અને આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. આજની સભાની શરૂઆત કેશવરબેન આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. કેશવરબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યો માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. धन्यवाद अतुल भाई और सभी लोगों का स्वागत है. आज का विषय तो आपको सर्वविदित है कि गोइंग बियॉन्ड माइंड, मन के पार जाना, और इसे हम आज अंग्रेजी में मुख्य वक्ता के रूप में नंदकुमार जी से सुनेंगे. साथ ही इसका मराठी वर्जन सुनेंगे आशा शिंदे जी से, और हिंदी में अर्चना मुंशी से ट्रांसलेशन को बताएंगी. तो शुरू करते हैं. नंदकुमार जी का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा. वैसे तो मैं इनको हिस्टोरियन कहता हूँ और सभी लोग इन्हें वही कहते हैं, क्योंकि ये जो शोध करके जो भी विषय पर लाते हैं वो बहुत सटीक होता है. उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से, बीई किया है उन्होंने सिविल में, और रिटायर्ड हुए 2015 में पंजाब राव देशमुख एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला से. मेंबर्स तो हैं ही टीएस के, बहुत सक्रिय मेंबर्स हैं, खूब लेक्चर्स देते हैं. मेंबरशिप उन्होंने अकोला लॉज में ली थी 1 दिसंबर 1997 में. फिर वो ट्रेजरर रहे 2008 से 2016 तक. फिर अकोला लॉज के प्रेसिडेंट रहे 2016 से 2019 तक, और मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट रहे 2016 से 2019 तक. नेशनल लेक्चरर हैं इंडियन सेक्शन के 2019 से, और त्रिवेणी के बहुत ही सक्रिय वक्ता हैं. आपका स्वागत है नंदकुमार जी, आपके हवाले. थैंक यू तरल जी. नमस्ते. नमस्ते. Good evening, everybody. Today's topic is going beyond mind. So we will start the first topic, first part of this speech. Krishnamurti and other thinkers tell us to empty the mind or quiet the mind. Your mind is always wandering. There is a great restlessness and agitation in the mind. Thus, this noisy mind cannot find the truth. Voice of Silence emphatically declares that mind is the slayer of the real. Slay the slayer, which means kill the mind and go beyond the mind. Be free from the thoughts. It is the only way to find the truth. We cannot kill the mind, we can transform the mind. The word Manonash is also used in Yoga Vasishtha. Hence, going beyond mind or transcending the mind
is essential for spiritual progress. The mind must dissolve completely into the mind itself, as it is the only tool we have. Destroying the mind is a very difficult task. We cannot destroy the mind. We can transform the mind. To break through all the veil of this limited mind requires great courage and strong will. The mind has to become invisible if we want to attain self-knowledge. So invisible means transformation. The higher state of consciousness is characterized by enlightenment, love, true joy, and understanding. Then, in the Yoga Vasishtha, the sage Vasishtha said, an unstrained mind alone is the cause of degeneration, while a controlled mind causes progress. Therefore, mind management is of utmost importance for spiritual growth. The Buddha taught us how to still the mind, to stop it from making attachments, discriminations, and feeling of aversions. When the state of calmness is attained, the darkness of ignorance will be dispelled. Means they are kept far away from that. And the mind can see the underlying unity. The core of Buddha's teaching is self-development and self-purification, leading to self-realization. We have to scrutinize the mind all the time and understand how it works. The mind is invisible, it is intangible, means it is abstract, it is outside the realm of the spiritual world and physical world. It is not something which can be put to any scientific test. We cannot put to any scientific test for its existence. But the mind is there, the power of mind is there. It is said that if the mind is comprehended, means understood, all things are comprehended. Buddha said mind precedes all phenomena. Mind matters most, and everything is mind-made. Mind-made. We should therefore turn inward into the deepest recesses of our mind. There are so many recesses in our mind. All human problems are mind-based. Only the quiet mind and silent mind can realize that happiness, which is not an external thing, but is in our own self. The happiness is inside ourselves. We do not never look within. We rarely examine thoughts, words, and actions. By self-examination, we gain insight into our own nature. And this demands sustained effort, constant effort. The mind is disoriented because it is drawn constantly by many forces. One should explore one's condition objectively, detachedly, and dispassionately. Meditation opens the way for the resolution of the most complex human problems. Psychological toxins are flushed out. This cannot be done by intellectual gymnastics or emotional stimulations or religious dramas.
we have to educate the mind to a new perception with patience and alertness. The mind is restless because of the presence of many impurities. Buddha declared, I know not any single thing that brings such misery as the mind uncontrolled, unguarded, and unstrained. The root cause for mental defilement means cleanliness, dirtiness, are craving, hatred, and delusion. To be liberated, one has to totally eradicate these impurities. The mind of such a person is not troubled by ups and downs of the life. The Buddha said, happiness results from acting with pure mind. Suffering is caused by acting with impure mind. By handling the mind in right way, we can find effective cures for all human ills. Hence, mind management is therefore an urgent need. J. Krishnamurti asks us to have a state of mind which looks at everything with complete attention. Totally. All impurities of the mind must be understood by awareness, directly, completely, and as a witness. By constant awareness, we can also get rid of bad habits. However, we must realize that whatever impurity we want to vanish will try to survive in the mind. So we have to patiently and perseveringly kindle the light of mindfulness, and again and again until we are able to get rid of that defilement, means dirtiness. Awareness or mindfulness is our only strength. The mind has to become invisible if we want to attain self-knowledge. The higher state of consciousness is characterized by enlightenment, love, true joy, and understanding. Whatever energy we call it as a mind, whatever energy runs through our body day and night in the name of intellect, mind, ego, and what we call it as mind is nothing but vibrations. Therefore, it has a vibrational existence throughout the body. It is such a pulsating motion made up of sanskara. It is called mind. Also, there is nothing, no entity which could be called an individual mind. Mind is collective. It is a product of collective, organized, standardized effort of conditioning the body and the brain and various energies flowing in the body. J. Krishnamurti said that the pure state of mind is the true and peaceful, and non-judgmental mind is true religious, and perverted mind is the cause of all the problems in the world, or being conditioned by the memories or sanskaras of one's birth, which leads to the formation of ego. J. Krishnamurti says that meditation is necessary to get answers to life's problem. In true meditation, concentration is achieved spontaneously. Meditation is the act of knowing oneself completely. It is necessary to observe these problems with a cautious mind. In meditation, there is a need for unceasing awareness of the surrounding worlds, thoughts, and feelings. This awareness of the existence is clear. In it, the outer mind is calm, and the subtleties of inner mind becomes known, and the whole activity of
our being is known, then the mind becomes calm, thoughtless. If we try to calm the mind by force and rule, it will become inactive. J. Krishnamurti said that in ancient times, some intellectuals and education experts considered the mind as a useful tool for knowledge. But in the modern world, we have computers that are not only capable of storing more information than the human mind, but also work in a more dignified manner. So why do you need a computer to do the work for you? So what is the purpose of the mind? The mind should be used as an instrument of observation without distortion. To see rightly, to observe intelligently, to observe without an observer is the role of the mind. The world is a beautiful place full of colors and light and playing shadows, and observe all this and many more without making images of what is seen, so that the mind is always dancing and fresh. Mind is always invaded by necessary thoughts, unnecessary thoughts, and dirty thoughts. So here we complete the first part of the speech. Thank you. Thank you so much, RAUT ji. And now we move to ASHA ji. Is your video on? आशा जी आपका वीडियो ऑन कीजिए. या थैंक यू. थैंक यू आशा जी. हेलो. आवाज आ रही है? हाँ आवाज. नहीं, आपका वीडियो स्टिल. हेलो, आवाज नहीं आ रहा है. अभी आ रहा है, आ रहा है. वीडियो आ नहीं रहा. आपका आवाज आ रहा अभी है? आ रहा है ना? हाँ आ रहा है. ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू. आ रहा है ना? हाँ आवाज आ रहा है आपका. हाँ. थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है. मैं स्पीकर से अनुरोध करूंगा कि एक बार जब वो सेटिंग कर लेते हैं पहले से, तो बाद में उसे बंद मत करिए आप वीडियो और कुछ भी. जैसा है वैसा रहने दीजिए, क्योंकि वो बंद चालू करने में कुछ कनेक्शन वो हो गया तो प्रॉब्लम हो जाता है. आशा जी. हाँ. अच्छा. हेलो. ठीक है, आप अपना ये ठीक कर लीजिए. तब तक मैं फिर अर्चना जी को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि नहीं नहीं चालू करूँ मैं अभी. हाँ हो गया. नहीं करती अभी. हाँ हाँ ठीक. आप बोले डिस्टर्बेंस आ रहा है तो मैंने ये विंडो पर ये किया. अभी आ रहा है आवाज? आशा जी आवाज आ रहा है, लेकिन आपका वीडियो स्थिर हो गया है. स्टिल हो गया आपका वीडियो. हाँ. अभी अभी आया? नहीं, आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा. आशा जी वापस ज्वाइन कीजिए और एक ही अच्छा जगह ठीक पर है. रहिएगा. तब तक मैं अर्चना जी को ले लेता हूँ, समय बर्बाद नहीं होगा. थैंक यू. हाँ चलेगा, कोई बात नहीं. रिज्वाइन करती है मैं. हाँ रिज्वाइन करिए प्लीज. ओके ओके. अर्चना जी का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा कि वे बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हैं. उन्होंने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में किया है मुंबई से, और मास्टर्स किया माइक्रोबायोलॉजी में बड़ौदा से. वे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रह चुकी हैं. बहुत सारे नाटक थिएटर से जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने स्कूल कॉलेज और प्रोफेशनल लेवल पर गुजराती, हिंदी, इंग्लिश थिएटर किया है. और भारतवर्ष में ही नहीं, बाहर भी वे यूएस वगैरह में भी उसके प्रदर्शन कर चुकी है. एफटीआई पुणे से उन्होंने कोर्स किया है और असिस्ट किया है उन्होंने डॉक्यूमेंट्री और कॉर्पोरेट फिल्म्स में. वे एक क्वालिफाइड अल्टरनेट मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स हैं नेचुरोपैथी की. नेचुरोपैथी उन्होंने गोत्री नेचुरोपैथी आश्रम वडोदरा में भी सीखी थी.
जो विनोबा भावे जी के गाइडेंस के अंदर शुरू हुआ था। अभी वे थियोसॉफी के साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति लॉज मुंबई की सेक्रेटरी हैं और बहुत ही सक्रिय हैं। तो अर्चना जी, आप हिंदी में इसका विवरण दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद तरल जी, और धन्यवाद नंद कुमार जी। एक और अच्छे से विषय के लिए मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं हिंदी में बोलूं। तो आज का विषय है मन से परे जाना। जी कृष्णमूर्ति और अन्य विचारक हमें मन को खाली करने या मन को शांत करने के लिए कहते हैं। आपका मन हमेशा सोचता रहता है, मन में बड़ी बेचैनी और हलचल है। इस प्रकार शोरगुल वाला मन सत्य को नहीं पा सकता। वॉइस ऑफ साइलेंस में जोरदार ढंग से घोषित करता है कि मन ही वास्तविकता का हत्यारा है। हत्यारे को मारो, जिसका अर्थ ये होता है कि मन को मारो और मन से परे जाओ, अपने खुद के विचारों से मुक्त हो जाओ। यह सत्य खोजने का एकमात्र तरीका है। मनोनशा शब्द का प्रयोग योग वशिष्ठ में भी किया गया है। इसीलिए मन से परे जाना या मन का अतिक्रमण करना आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। मन को पूरी तरह से मन में विलीन हो जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे पास एकमात्र उपकरण है। मन को नष्ट करना बहुत कठिन कार्य है। इस सीमित मन के पर्दे को तोड़ने के लिए बड़े साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो मन को अदृश्य होना होगा। चेतना की उच्च अवस्था की विशेषता आत्मज्ञान, प्रेम, सच्चा आनंद और समझ है। जिस भी ऊर्जा को हम मन कहते हैं, जो भी ऊर्जा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के नाम से दिन रात हमारे शरीर में दौड़ती रहती है और जिसे हम मन कहते हैं, वह एक कंपन के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए पूरे शरीर में एक कंपनात्मक अस्तित्व है। यह संस्कारों से बनी एक स्पंदित गति है। इसे हम मन कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी इकाई नहीं है जिसे व्यक्तिगत मन कहा जा सके। मन सामूहिक है। ये शरीर और मस्तिष्क तथा शरीर में प्रवाहित होने वाली विभिन्न ऊर्जाओं की कंडीशनिंग के सामूहिक संगठित मानकीकृत प्रयास का एक उत्पाद है। जे कृष्णमूर्ति जी ने कहा है कि मन की शुद्ध अवस्था सच्ची और शांतिपूर्ण और गैर निर्णयात्मक होती है। मन सच्चा धार्मिक है। संसार की समस्त समस्याओं का कारण विकृत मन है। क्या किसी के जन्म के संस्कारों की श्रुतियों से संस्कृत होने का एक अहंकार का निर्माण होता है। जय कृष्णमूर्ति जी का कहना है कि जीवन की समस्याओं का उत्तर पाने के लिए ध्यान आवश्यक है। सच्चे ध्यान में एकाग्रता अनायास ही प्राप्त हो जाती है। ध्यान स्वयं को पूर्ण रूप से जानने के लिए की क्रिया है। इन समस्याओं का सतर्क मन से निरीक्षण करना आवश्यक है। ध्यान में आसपास की दुनिया, विचारों और भावनाओं के प्रति निरंतर जागरूकता की आवश्यकता होती है। अस्तित्व की यह जागरूकता स्पष्ट है। इसमें बाहरी मन शांत हो जाता है और आंतरिक मन की सूक्ष्मताएं ज्ञात हो जाती है और हमारे अस्तित्व की संपूर्ण गतिविधि भी ज्ञात हो जाती है। तब मन शांत और विचार शून्य हो जाता है। यदि हम बल और नियम से मन को शांत करने का प्रयास करेंगे तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति जी ने कहा है कि प्राचीन काल में कुछ बुद्धिजीवी और शिक्षा विशेषज्ञ दिमाग को ज्ञान के लिए एक उपयोगी उपकरण मानते थे, लेकिन आधुनिक दुनिया में हमारे पास ऐसे कंप्यूटर हैं जो न केवल स्टोरेज यानी भंडारण करने में सक्षम है और इंसानी दिमाग से ज्यादा जानकारी लेकर ज्यादा गरिमा और तैतरिक से भी काम करते हैं।
आपको अपना काम करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों है? तो मन का उद्देश्य क्या है? मन को बिना विचलित हुए अवलोकन के साधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। सही ढंग से देखना, बुद्धिमानी से निरीक्षण करना, पर्यवेक्षक के बिना निरीक्षण करना, ये मन की भूमिका है। दुनिया एक खूबसूरत जगह है जो रंगों और रोशनी से भरी हुई है और परछाइयों से भी भरी हुई है। जो देखा जाता है तो उनकी छवियां बनाएं, बिना इस सभी बहुत कुछ का निरीक्षण करती है ताकि मन हमेशा ताजा नृत्य करता रहे। मन में हमेशा आवश्यक विचार, अनावश्यक विचार, विचार और गंदे विचार घिरे रहते हैं। यही भाग पहला समाप्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना जी। और अभी मैं आशा जी को आमंत्रित करूंगा। अभी मेरा वीडियो दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रहा है आपका, चिंता मत कीजिए। अभी आ रहा है। जी जी जी। ओके, 2 मिनट में मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय दे दूं, फिर शुरू करते हैं। हम्म, आशा शिंदे जी 2019 में थियोसॉफी से जुड़ी है कल्याण डोंबिवली लॉज से। वे एक एडवांस प्राणी किलर है, एक अच्छी कुक है, शेफ है, और एक टिफिन सेंटर में चलाती है। साथ ही मास्टर हैं एक्यूप्रेशर में, और थियोसॉफी में एक्टिव हैं, त्रिवेणी में भी बार बार आती रहती हैं। तो आशा जी, आप मराठी में आज का विषय बताइए, भाग 1। धन्यवाद। ठीक आहे. मी सर्वप्रथम सर्वांचे आभार मानते. आज तुमच्या सगळ्याच्या कृपेने आज मराठी दिवसच्या दिवशी मला हे करण्याचं भाग्य मिळालं. मी सगळ्यांचे खूप 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 आभारी आहे. आजचा विषय जो आहे तो खूपच छान आहे. गोईंग बियॉन्ड द माइंड म्हणजे मनाच्या पलीकडे जाणे. जे कृष्णमूर्ती आणि इतर विचारवंत आपल्याला मन रिकामे करण्यास किंवा मनाला शांत करण्यास सांगतात. क्वाइट माइंड. आपली मने सदैव चिकलफेक करत असतात. मनामध्ये एक प्रचंड बेचैनी व आंदोलने असतात. अशा प्रकारे विवाद करणारे मन सत्याचा शोध घेऊ शकत नाही. जोरदारपणे घोषित करते की माइंड इज द स्लेयर ऑफ द रियल. स्ले द स्लेयर. याचा अर्थ की मनाला मारून टाक व मनाच्या पलीकडे जा. विचारापासून मुक्त व्हा. सत्य शोधण्याचा तो एकमेव मार्ग आहे. योगशिष्टामध्ये सुद्धा मनोनाश शब्द वापरला गेला. म्हणून मनाच्या पलीकडे जाणे हे आध्यात्मिक प्रगतीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. मन हे पूर्णपणे मनातच विरघळलेले पाहिजे, कारण तेच आपणाकडील एकमेव साधन आहे. मनाचा नाश करणे हे खूप कठीण काम आहे. या मर्यादित मनाच्या बुरख्यामधून छिद्र पाडण्याची प्रचंड ध्येय व सामर्थ्याची तीव्र इच्छा करणे आवश्यक आहे. आपल्याला आत्मज्ञान प्राप्त करण्याची इच्छा असल्यास मनाला अदृश्य व्हावे लागेल. जाणीवेची ही उच्च अवस्था शुद्धता, प्रेम, खरा आनंद समजणे याच्या द्वारे दर्शविले जाते. आपण ज्याला मन म्हणतो ती जी काही ऊर्जा आहे, मन, बुद्धी, चित्त, अहंकाराच्या नावाने आपल्याला शरीरामध्ये रात्रंदिवस धावपळ करणारी ज्याला आपण मन म्हणतो ते म्हणजे कंपनाशिवाय दुसरे काही नाही. म्हणून तीच सगळ्या शरीरभर स्पंदनात्मक अस्तित्व आहे, जी संस्कारांनी भरलेली आहे. अशी स्पंदनाची गती आहे. त्याला मन म्हणायचं. ज्याला मन म्हणता येईल असं काही व्यक्तिगत नाही. मनाची शुद्ध अवस्था ही खरी असून शांत म्हणजे निर्विचार मन हे खरे धार्मिक मन, रिलिजियस माइंड हे होय, असे जे कृष्णमूर्ती म्हणतात. जगातील सर्व समस्येचे कारण विकृत मन हेच आहे. हे मन अनंत काळच्या किंवा जन्मजन्मीच्या स्मृती किंवा संस्कारांनी बद्ध असल्याने अहंकाराची निर्मिती करते. जीवनातील समस्याचे उत्तर मिळवण्यासाठी ध्यान आवश्यक आहे, असे कृष्णमूर्ती सांगतात. खऱ्या ध्यानामध्ये उत्स्फूर्तपणे एकाग्रता साधणे, ध्यान म्हणजे स्वतःला संपूर्णपणे जाणून घेण्याची किंवा या समस्येचे अवलोकन सावध मनाने करणे आवश्यक आहे. असा उपाय जे कृष्णमूर्ती सुचवतात. ध्यानामध्ये प्रत्येक शब्द, विचार व भावना या संबंधी अखंड साधनेची आवश्यकता आहे.
त्याने आपल्या अस्तित्वाची जाणीव स्पष्ट होते. त्यामध्ये बाह्य मन शांत होऊन अंतर्मनाचे बारकावे कळून येतात व आपल्या अस्तित्वाची संपूर्ण क्रिया कळून येते. त्यानंतरच हे मन शांत निसारी बनते. सक्ती व नियम याने मनाला शांत बनवण्याचा प्रयत्न केल्यास ते निष्क्रिय बनते. कृष्णमूर्ती म्हणतात, प्राचीन काळी काही तत्व व्यक्ती आणि शिक्षण तज्ञांनी मनाला ज्ञानाचे साधन मानले. ज्ञानाचे उपयुक्त भांडार म्हणून मनाकडे पाहिले जायचे. आधुनिक जगात आपल्याकडे असे संगणक आहेत जे केवळ मानवी मनापेक्षा अधिक जलद माहिती सांगण्यास सक्षमच नाही तर अधिक अचूकपणे देखील कार्य करतात. हे काम करण्यासाठी संगणक असताना तुमच्या मनावर ज्ञानाचे ओझे का टाकायचे? मग मनाचा हेतू काय? विकृतीशिवाय निरीक्षणाचे साधन म्हणून मनाचा वापर केला पाहिजे. योग्य रीतीने पाहणे, बुद्धिमान निरीक्षकाशिवाय निरीक्षण हीच मनाची भूमिका आहे. जग एक सुंदर ठिकाण आहे. रंग आणि प्रकाश आणि रूप आणि खोल सावल्याने भरलेले आहे. फक्त या सर्वांचे गोष्टीचे निरीक्षण करा आणि बरंच काही जे पाहिले जाते त्याची प्रतिमा न बनवता, जेणेकरून मन सदैव नवीन असे, ताजे निष्पाप तरुण मनाच्या ठिकाणी नेहमी आवश्यक विचाराचे, अनावश्यक विचाराचे, चांगले विचाराचे आणि घाणेरड्या विचाराचे आक्रमण असते. आपण ध्यानात बसलो तरी विवादास्पद विचार आपले मानसिक संतुलन बिघडते. तरी आपण दुःखी होण्याची गरज नाही, कारण मन हे वेगवेगळ्या विचारावर भटकत राहते. तो मनाचे ते स्वरूपच आहे. आपल्या सर्वांचे ये पार्ट 2 है. हो. अभी रुकने क्या है जी? अभी रुकने क्या है ना? हाँ जी, हाँ जी. ओके ओके, सॉरी, थैंक यू. हाँ, ये पार्ट में जी, प्लीज गो अहेड विथ पार्ट 2. अनम्यूट कर लीजिए. आशाजींनी छान सांगितलं मराठीत. Yes sir, go ahead sir. Thank you. Even if we meditate, conflicting thoughts disturb our mental balance, and yet we need not be sad because the mind wanders on different subjects, and that is the nature of the mind. All of our minds are like monkeys jumping from tree to tree. Although the mind is fickle in nature, it is possible to master the mind by adopting the technique of meditation. Meditation can take us deep into the unconscious mind, where the layers of the impurity lie and cause mental dissatisfaction. It is possible to manage the mind through long studies and persistence and a sense of detachment. One can see the flow of thoughts without any attachment, without any evaluation, and without any involvement. So we should not involve in meditation, we should not involve about the thoughts, evaluate and attach. The flow of thoughts, let it go. We only see them as a companion, as an observer, incapable or unenjoyable. It is the really hard work we only do as a viewer, and it is possible with our courage and persistence. It is also possible to go beyond thoughts and beyond mind for a while. As we practice, the no mind period increases. Means beyond mind. We easily look apathetic and detached. This is a very typical task,
and you should not expect immediate results or miracles. It requires constant vigilance and patience. J. Krishnamurti advises to develop constantly an awareness. He said, flame of attention will remove all negativity and impurity, and lastly, will lead to a state of free thought. The Buddha called it the fire of mindfulness, which ultimately leads to the state of mental liberation. Now, how the mind works, let us see a nice story of Adi Shankaracharya teaching to his disciples about how to empty and free the mind. Adi Shankaracharya was walking through the marketplace with his disciples. They saw a man dragging a cow by a rope. Shankaracharya told his disciples to surround them and said, I am going to teach you something important. He then continued and he said, tell me who is bound to whom? Who is bound to whom? Is it the cow bound to the man, or the man is bound to the cow? The disciples answered without hesitation. They said, of course, the cow is bound to the man. The man is the master. He is holding the rope. The cow has to follow him wherever he goes. The man is the master and the cow is the slave. Now watch this, said Shankaracharya, and he took a pair of scissors from his bag and cut the rope. The cow ran away from the master and the man ran after his cow. Look what is happening, Shankaracharya told. Do you see who the master is? The cow is not at all interested in this man. The cow, in fact, is trying to escape from the man. This is the case with our minds. All types of garbage that we may carry inside our mind, like anger, jealousy, hate, fear, is not interested. So anger, jealousy, hate, fear is not interested in us. We are interested in it. We are keeping it together for years and don't want to empty or free our minds. The moment we lose interest in all this garbage that has completely filled our mind, we will understand the futility of it and it will start to disappear. Like the cow, it will escape and disappear and run to safety. We will then free our mind. So this was the example. J. Krishnamurti said, when the mind is free from all its projections, there is a state of quietness in which problems cease. It is only the silent mind that shall see the truth, not the mind that makes an effort to see. If you are making an effort to hear what someone is saying, will you hear? It is only when you are quiet, when you are really silent, that you understand. Then, if you observe closely, listen quietly, then you will hear. But if you struggle to catch everything that is being said, your energy will be dissipated in the strain, in the efforts. So you will not find truth through effort. It doesn't matter who says it.
whether the ancient books, the ancient saints, or the modern one. Effort is the very denial of understanding, and it is the only quiet mind, the simple mind, the mind that is still, that is not overtaxed by its own efforts. Only such a mind shall understand, shall see the truth. Truth is not something in the distance. There is no path to it. There is neither your path nor my path. There is no devotional path. There is no path of knowledge also, or path of action, because truth has no path to it. We easily look apathetic and detach. This is a very difficult task, and you should not expect immediate results or miracles. It requires constant vigilance and patience. J. Krishnamurti advises to develop constantly an awareness. He said, flame of attention will remove all negativity and impurity, and lastly, will lead to a state of free thought. The Buddha called it the fire of mindfulness, which ultimately leads to the state of mental liberation. We have to choose the right meditation technique, which will not only work on the surface of the mind, but it can take us deep into the unconscious mind, where there are all impurities. Meditation methods that involve visualization or verbalization work only at the surface level of the mind. Verbalization involves merely mechanically chanting a mantra. Visualization mantra means imagining and meditating on the things that are not real. Both these methods involve superficial relaxation of the mind. But to purify the mind, it is necessary to go deep into the inner parts of the mind. It is necessary to purify the entire mind, and only then one can go beyond the mind. In this way, a state of thoughtfulness is attained, and enlightenment can be awakened, and one can unravel the mysteries of life. Vipassana meditation is a method of meditation that was revived by Lord Buddha. Vipassana means observing the breath, looking at it. This method is also useful for purifying the mind. That method can take you deep into the unconscious mind. This kind of meditative methods leads to introspection, and consequently leads to purification of minds. This meditation allows one to penetrate so deeply that this meditation helps you to realize that the absolute true happiness is within you and is not dependent on external objects. This leads to pure love, compassion, and understanding, and one enters the realm of peace and wisdom. Meditation leads to a better health, a happier mind, and a stronger spiritual sense of relationship. There are many benefits at the physical level as well. The function of all the organs in the body becomes excellent and effective. It has been noticed that the higher blood pressure becomes normal, cholesterol level is also reduced. The cardiologist also suggests the meditation. The psychiatrists also advise meditation. It has also been noticed that meditation can help those who do not live well. Biologically, meditation reduces the aging process also.
meditation has been found to increase blood flow and improve blood sugar levels, reducing anxiety, stress, and high blood pressure. A holistic transformation takes place. J. Krishnamurti said self-mutation takes place in brain cells. Modern science proved that J. Krishnamurti's statement about brain cells is true scientifically. Meditation initiates new channels in the brain. We get new brain and heart. With the right method of meditation, we can eliminate all the problems in our internal development. When the whole mind is purified, then it leads to vigilance and awareness. We become calm and quiet, and we can go beyond mind. We go to liberation. You see yourself. Meditation, you see yourself. Meditation brings in contact with the cosmic power, which brings bliss, pure love. Meditation creates good vibrations and thus benefits others besides ourselves. We can share goodwill and loving kindness with them. So here we finish up the today's topic, going beyond mind. So thank you very much. Thank you, Taralji. थैंक यू सर, एंड वी विल कम बैक टू यू. प्रोग्राम जैसे ही स्पीच खत्म होती है उसके बाद आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं. सारे लोग, वक्ता लोग जो यहाँ हैं वो भी ऐड कर सकते हैं. अब मराठी के लिए मैं आशा जी से कहूंगा कि वे पार्ट 2 कहें. थैंक यू. आपण ध्यानात बसलो तरी विवादास्पद विचार आपले मानसिक संतुलन बिघडवतो. तरी असे असले तरी आपण दुःखी होण्याची गरज नाही, कारण मन हे वेगवेगळ्या विषयावर भटकतच राहते. मनाचे ते तसंच आहे. आपल्या सर्वांचे मन एका झाडावर दुसऱ्या झाडावर उड्या मारण्याच्या माकडाप्रमाणे आहे. मन चंचल स्वभावाचे असले तरी ध्यान साधण्याचे तंत्र अवलंबून मनावरच प्रभुत्व मिळवणे शक्य आहे. ध्यान आपल्याला अचेतन मनाच्या अगदी खोलवर नेऊ शकते, की जेथे अपवित्रतेच्या थरावर थर पडलेले असतात व त्यामुळे मानसिक असंतोष निर्माण होत असतो. दीर्घ अभ्यासाद्वारे आणि चिकाटीने आणि अलिप्ततेच्या भावनेने मनाचे व्यवस्थापन करणे शक्य आहे. कोणत्याही प्रकारची आसक्ती न ठेवता, कोणत्याही प्रकारे मूल्यमापन न करता आणि कोणत्याही त्यातील सहभागाशिवाय विचारांचा प्रवाह पाहू शकतो. आम्ही फक्त त्यांना साक्षी भावाने एक निरीक्षक म्हणून कर्त्यासारखा नसलेला किंवा आनंद घेणारा म्हणूनच पाहतो. हे खरोखरच कठोर परिश्रम आहे. आम्ही फक्त एक दर्शक म्हणून प्रगती करतो. ध्येय आणि चिकाटीने थोड्या काळासाठी विचाराच्या पलीकडे आणि मनाच्या पलीकडे जाणे शक्य आहे. जसं आपण सराव करतो तसा मन कालावधी वाढत जातो. आपण सहजपणे औदासिकपूर्वक समतेने आणि अलिप्तपणे पाहतो. हे एक खूप कठीण काम आहे आणि आपण त्वरित परिणाम किंवा चमत्काराची अपेक्षा करू नये. सतत दक्षतेची आणि सावधपणाची गरज असते. जे कृष्णमूर्ती सतत जागरूकता विकसित करण्याचा सल्ला देतात. ते म्हणतात की लक्षाची ज्योत सर्व नकारात्मक आणि अशुद्ध नष्ट करेल आणि शेवटी विचारमुक्त अवस्था प्राप्त होईल. बुद्धांनी याला सावधपणाचा अग्नी म्हटले आहे, ज्यामुळे शेवटी मानसिक मुक्त स्थिती प्राप्त होईल, जे केवळ मनाच्या पृष्ठभागावर कार्य करणार नाही. असे आम्हाला योग्य ध्यान तंत्र निवडावे लागेल की ते आपल्याला अचेतन मनाच्या खोलवर नेऊ शकते, जे सर्व अशुद्धी आहे. ध्यान करण्याची पद्धती ज्यात दृष्ट मान्यता किंवा तोंडी असते ते केवळ मनाच्या पृष्ठभागावरच्याच पातळीवर कार्य करते. व्हर्बलायझेशन मध्ये केवळ यांत्रिक पद्धतीने मंत्राचा जप करणे, दृष्ट मानता व्हिज्युअलायझेशन म्हणजे ज्या बाबी खऱ्या नाही अशा त्याच्यावर कल्पना करून ध्यान करणे.
या दोन्ही पद्धतीमध्ये मनाचे वरवरचे रिअलायझेशन होते, विश्रांती मिळते. परंतु मनाचे शुद्धीकरणासाठी मनाच्या आतील भागामध्ये खोलवर जाणे आवश्यक आहे. संपूर्ण मनाचे शुद्धीकरण करणे गरजेचे आहे आणि त्यानंतरच मनाच्या पलीकडे जाता येईल. अशा वेळी विचार हीच अवस्था प्राप्त होणे व प्रज्ञान जागृत होऊन व्यक्ती जीवनातील रहस्य उलगडू शकतो. विपश्यना ध्यान ही एक ध्यानाची पद्धत अशी आहे की लॉर्ड बुद्धांनी तिला पुनर्जीवित केली आहे. विपश्यनेचा अर्थ श्वासाचंच निरीक्षण करणे, त्याला पाहणे असं आहे. ही पद्धती सुद्धा मनाचे शुद्धीकरण करण्याकरता उपयोगी आहे. ही पद्धती आपणास अचेतन मनाच्या खोलवर नेऊ शकते. अशा प्रकारच्या ध्यानाच्या पद्धतीमध्ये आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षणद्वारे आत्मशुद्धीकरण होते. हे ध्यान एखाद्याला स्वतःमध्ये खूप खोलवर प्रवेश करू शकते. या ध्यानामध्ये आपणास हे समजण्यास मदत होते की परिपूर्ण वास्तविक आनंद आपल्याला आहे आणि बाह्य वस्तू किंवा व्यक्तीमध्ये नाही. यात शुद्ध प्रेम, करुणा आणि समजूतदारपणा आहे. व्यक्तीच्या शांत आणि सुबुद्धपणाच्या प्रदेशात प्रवेश होतो. ध्यानामुळे उत्तम शरीर, आनंदी मन आणि मजबूत आध्यात्मिक संबंध निर्माण होते. भौतिक पातळीवर सुद्धा अनेक फायदे होतात. शरीरातील सर्व इंद्रियाचे कार्य उत्तम प्रकारे व प्रभावी होते. वैद्यकीय संशोधनानुसार हे निदर्शनास आले आहे की ध्यानामुळे वाढलेला रक्तदाब कमी होऊन सामान्य होतो, कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी होते, हृदयाचे ठोके इत्यादी सामान्य होतात. आताच्या काळात कार्डिओलॉजिस्ट हृदय तज्ञ औषधाबरोबर ध्यान करण्याचे सुचवितात. मनोरोग तज्ञ सुद्धा त्यांच्या पेशंटला की ज्याची मनस्थिती बरोबर राहत नाही त्यांना ध्यान करण्याचा सल्ला देतात. वैद्यकीय संशोधनातून असे निदर्शनास आले आहे की ध्यान धारणा करणारे लोक त्यांच्या खऱ्या वयापेक्षा कमी वयाचे तरुण दिसतात, तर जैविक दृष्ट्या चांगले असतात. ध्यान धारणेमुळे वृद्ध होण्याचे प्रमाण कमी होते. ध्यानामुळे रक्तप्रवाह वाढतो व सुरळीत होतो व त्यामुळे दुःख शर्करा पातळी कमी होते. ज्यांना चिंता, ताणतणाव आणि उच्च रक्तदाब होतो त्यांच्या दुःख शर्करा पातळीमध्ये वाढ झालेली आढळते. तर दुःख शर्करा पातळीमुळे खोलवर रिलॅक्सेशन होते. म्हणूनच ध्यानामुळे मनाच्या शांतीमध्ये व प्रशांतीमध्ये वाढ होते. पीस अँड हार्मनी यांचे व्यवस्थापन चांगले होते. समग्र परिवर्तन होते. हे कृष्णमूर्ती म्हणतात, मेंदूच्या पेशीमध्ये स्वतःचे उत्पत्तीकरण म्युटेशन होते. आधुनिक युगामध्ये संशोधनामुळे हे सिद्ध झाले आहे की कृष्णमूर्तीचे हे मेंदूतील पेशंटच्या बाबतीत शक्य वैज्ञानिक पुरावा देता येतो. ध्यानामुळे नवीन चॅनेल प्रवाह मेंदूमध्ये सुरू होतात. आपणास नवीन मेंदू व नवीन हृदय प्राप्त होते. ध्यानाच्या योग्य पद्धतीमुळे आपणास आपल्या आध्यात्मिक विकासातील सर्व अडथळे समस्या नाहीशा करता येतात. समग्र मन शुद्ध होते, दक्षता व जागृती होते, शांत होते आणि आपण मनाच्या पलीकडे जातो, आपण मुक्तीकडे जातो. आपणास आपल्या स्वतःचे दर्शन होते, इनर सेल्फ. ध्यानामुळे वैश्विक सत्तेची सर्व होतो, त्याच्यामुळे आनंद, शुद्ध प्रेम याचा लाभ होतो. ध्यान करताना उत्तम स्पंदने निर्माण होतात आणि त्यामुळे आपल्याशिवाय इतरांना त्याचा लाभ होतो. आपण गुडविल अँड लव्हिंग काइंडनेस याच्यामध्ये समर्पित शेअर करू शकतो. थँक्यू. थैंक यू सो मच. अर्चना जी, आपसे गुजारिश है पार्ट 2 हिंदी में कहें. धन्यवाद. यदि हम ध्यान भी करते हैं तो परस्पर विरोधी विचार हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं. फिर भी हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन विभिन्न विषयों पर भटकता रहता है और यही मन का स्वभाव है. हम सभी के दिमाग एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए बंदरों की तरह है. हालांकि मन स्वभाव से चंचल है, लेकिन ध्यान की तकनीकों को अपनाकर मन पर काबू पाना संभव है. ध्यान हमें अचेतन मन की गहराई तक ले जा सकता है, जहां अपवित्रता की परतें पड़ी रहती हैं और जो मानसिक असंतोष का कारण बनती हैं.
लंबे अध्ययन और दृढ़ता तथा वैराग्य की भावना से मन को नियंत्रित करना संभव है। कोई विचारों के प्रभाव को बिना किसी लगाव के, बिना किसी विकास के और बिना किसी भागीदारी के देख सकता है। हम उन्हें केवल एक साथी या साक्षी के रूप में, एक पर्यवेक्षक के रूप में, अक्षम या आनंदहीन के रूप में देखते हैं। ये वास्तव में कड़ी मेहनत है जो हमें केवल एक दर्शक के रूप में करते हैं, और ये साहस और दृढ़ता के साथ संभव है कि कुछ समय के लिए विचारों से परे और मन से परे जाना संभव है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, नासमझी यानी बिना दिमाग की अवधि बढ़ती जाती है। हम आसानी से अलिप्त और अलग दिख सकते हैं। ये बहुत कठिन काम है और आपको तत्काल परिणाम या चमत्कार की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए एक निरंतर सतर्कता और धैर्य की आवश्यकता होती है। जे कृष्णमूर्ति निरंतर जागरूकता विकसित करने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि ध्यान की लौ सभी नकारात्मक और अशुद्धता को दूर कर देगी और अंततः स्वतंत्र विचार की स्थिति में लाएगी। बुद्ध ने इसे चेतनता की आग कहा, जो अंततः मानसिक मुक्ति की स्थिति की ओर ले जाती है। और यही राउत साहब ने एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया आदि शंकराचार्य की। उन्होंने कहानी बताई कि आदि शंकराचार्य जी उनके अनुयायी के साथ, उनके स्टूडेंट्स के साथ कहीं घूम रहे थे बाजार में, और उन्होंने पूछा कि मन को मालिक कौन है, मन का और इच्छाओं का क्या है। तो उन्होंने बताया, मैं एक उदाहरण देता हूँ। उन्होंने देखा एक गाय को 4-5 लोग बांध के घसीट कर लेकर जा रहे थे। तब आदि शंकराचार्य जी ने उनके शिष्यों से पूछा कि बताओ इसमें मालिक कौन है, गाय या आदमी? तो शिष्यों ने कहा कि आदमी जो उनको खींच के लेके जा रहा है। मैं कहा अच्छा। तो आदि शंकराचार्य जी ने वो जो जिससे खींच रहे थे वो रस्सी को काट दिया। जैसे ही रस्सी को काटा, गाय भाग गई और मालिक उसके पीछे पीछे भागा। तब आदि शंकराचार्य जी ने के बोला कि इसमें क्या पता चला, ये जब गाय है वो सारी अपनी इच्छाएं के स्वरूप है और आदमी उसको पीछे पीछे उसके ढूंढते भागता फिरता है। लगता है कि वो आदमी इच्छाओं को खींच रहा है, पर असल में ये बात नहीं है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने ये समझाया हमें। अब वापस ध्यान की तरफ आते हुए उन्होंने बताया कि हमें सही ध्यान यानी ध्यान की तकनीक चुननी होगी, जो न केवल मन की सतह पर काम करेगी, बल्कि यह हमें अचेतन मन में गहराई तक ले जा सकेगी, जहां सारी अशुद्धियां हैं। ध्यान की वे विधियां जिनमें दृश्यावलोकन या शब्दांडंबर यानी बहुत सारे वर्बल होता है, केवल मन की सतही स्तर पर ही काम करती है, लेकिन मौखिकरण यानी वर्बलाइजेशन में केवल यंत्रवत रूप से मंत्र का जाप करना शामिल है। और विजुअलाइजेशन मंत्र का अर्थ है कि उन चीजों की कल्पना करना और ध्यान करना जो वास्तविक में नहीं है। इन दोनों विधियों में मन को सतही तौर पर आराम देना शामिल है, लेकिन मन को शुद्ध करने के लिए मन के भीतरी हिस्सों में गहराई तक जाना जरूरी है। संपूर्ण मन को शुद्ध करना आवश्यक है और केवल तभी कोई मन से परे जा सकता है। इस प्रकार विचार शून्यता की स्थिति प्राप्त की जा सकती है और आत्मज्ञान को जागृत किया जा सकता है तथा जीवन के रहस्यों को भी उजागर किया जा सकता है। विपश्यना ध्यान की एक विधि है जिसे भगवान बुद्ध द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। विपश्यना का अर्थ है सांस को देखना, उसे देखना। यह विधि मन को शुद्ध करने के लिए भी उपयोगी है। यह विधि तुम्हें अचेतन मन में गहराई तक ले जा सकती है। इस प्रकार की ध्यान विधियों से आत्मनिरीक्षण होता है और परिणाम स्वरूप मन की शुद्धि होती है। यह ध्यान व्यक्ति को इतनी गहराई से प्रवेश करने की अनुमति देता है कि ये ध्यान को आप ये महसूस करने में मदद करता है कि खुशी की पूर्णता आपके भीतर है और बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं है। इससे शुद्ध प्रेम, करुणा और समझ पैदा होती है और व्यक्ति शांति और ज्ञान के दायरे में प्रवेश करता है। ध्यान से बेहतर स्वास्थ्य, प्रसन्न मन
और मजबूत आध्यात्मिक भावना का रिश्ता बनता है। शारीरिक स्तर पर भी होते हो कई फायदे शरीर के सभी अंगों की कार्य प्रणाली को उत्तम और प्रभावी करते हैं। ऐसा देखा गया है कि उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम हो जाता है। हृदय रोग विशेषज्ञ ध्यान का सुझाव देते हैं, मनोचिकित्सक भी ध्यान की सलाह देते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि वे ध्यान की सलाह दे रहे हैं मनोचिकित्सक। ध्यान उन लोगों की मदद कर सकता है जिनका जीवन अच्छा नहीं है। जैविक रूप से ध्यान उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी कम करता है। ये पाया गया है कि ध्यान रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और रक्त शर्करा यानी ब्लड ग्लूकोज के स्तर में भी सुधार करता है, जिससे चिंता, तनाव और उच्च रक्तचाप भी कम हो जाता है। ये एक समग्र परिवर्तन घटित होता है। जे कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि मस्तिष्क की कोशिकाओं में ध्यान से स्व उत्परिवर्तन होता है, यानी कि वो नई से कुछ बनती हैं ध्यान करने से। अब आधुनिक विज्ञान में यही साबित करता है कि मस्तिष्क की कोशिकाओं के बारे में जो जे कृष्णमूर्ति का कथन वैज्ञानिक रूप से सत्य है। इनको आजकल एक बहुत ही प्रचलित हुआ है शब्द रीवायरिंग। ये रीवायरिंग में मदद करता है। ध्यान मस्तिष्क में एक नए चैनल शुरू करता है, इससे हमें नया मस्तिष्क और हृदय मिलता है। ध्यान की सही विधि से हम अपने आंतरिक विकास में आने वाली सभी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। जब पूरा मन शुद्ध हो जाता है तो इससे सतर्कता और जागरूकता आती है। हम शांत, चुप हो जाते हैं और हम मन से परे जा सकते हैं। हम मुक्ति में जाते हैं। आप अपने स्वयं को देखते हैं। ध्यान ब्रह्मांडीय शक्ति के संपर्क में लाता है, जो आनंद, शुद्ध प्रेम लाता है। ध्यान से अच्छा कंपन पैदा होता है और हमारे अलावा दूसरों को भी फायदा होता है। हम उनके साथ सद्भावना और प्रेम पूर्ण दयालुता साझा कर सकते हैं। धन्यवाद राउत जी, बहुत ही सुंदर विषय देने के लिए। यहाँ दूसरा भाग समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू अर्चना जी। और मैं आमंत्रित करूंगा राउत जी को कुछ और ऐड करना चाहें तो। आशा शिंदे जी अगर इसी विषय पे कुछ ऐड करना चाहे तो, वरना इट इज ओपन टू ऑल द स्पीकर्स, आई मीन पार्टिसिपेंट्स, टू डू एनी सजेशन और अ क्वेश्चन आल्सो दे कैन आस्क। ओपन टू ऑल। यस राउत जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? उमाकांत जी, दिनाकरण जी, you are there. Do you want to add anything? Yeah, please go ahead. दिनाकरण जी, yeah. सबको नमस्कार. I listened the English part of the talk, which I could follow. I hope the other translators also did a good job on this serious subject. First of all, I would like to congratulate them, which always a subject for serious students of Theosophy. To understand Krishnamurti is to understand our own mind, its operations, its own conditioning. The thing is, we are not aware of our own conditioning, how our mind is conditioned by our culture, our religion, our caste and creed, connections, language, whether we are living in a particular geographical area. These are all conditioning our mind. Krishnaji wanted to liberate people unconditionally. That was his message when he dissolved the order of the star in the east. I wanted to set man unconditionally free, but many people could not follow that
statement, the thought that he was going on another path like a yoga brashta. But the teachings of Krishnamurti is to be pondered, reading one or two books by Krishna ji. And in the light of that book, we can see ourselves. That books act like a mirror. For example, freedom, first and last freedom, freedom from the known, education and significance of life. Such books will open our mind to things which were unknown to us all the time. So I would like to congratulate everybody who participated in this program and who spoke on Krishnaji's teaching. Thank you. थैंक यू दिनाकरण जी। जी सुषमा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, बहुत अच्छी प्रस्तुति है। कुछ कहना तो नहीं, खाली जय कृष्णमूर्ति जी पे बात हुई तो मुझे ध्यान आया कि जय कृष्णमूर्ति जी, जैसे अभी दीनाकरण जी ने बताया कि हमारे मन में लाखों वर्ष की कंडीशनिंग रहती है, लाखों वर्ष की कंडीशनिंग रहती है और हम उसी कंडीशनिंग के साथ पैदा होते हैं। और हम एक अपने मन में जब हम कोई विचार लेते हैं तो हम सोचते हैं, उस विचार को कंडेम करते हैं, कोई हम आइडियोलॉजी बना सकते हैं, कोई हम उसके पीछे कोई डिजायर होती है, कोई प्रेशर होता है, हम उस थॉट को चेंज करना चाहते हैं। कहते हैं ये जो वास्तव में ये कंडीशनिंग है, उससे हटकर हमको अवलोकन करना है। वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, हमको अवलोकन करना है। और अवलोकन करने का तात्पर्य खाली नेत्रों से देखना नहीं, अवलोकन का तात्पर्य है कि हम उसको अपने भीतर से देखें। तो मन के पार हम तभी जा सकते हैं कि जब हम अपने पूर्व की स्मृतियों से परे जाएं, अपनी कंडीशनिंग को तोड़ें और किसी आइडियोलॉजी, किसी प्रेशर, किसी कंडेमनेशन, किसी डिजायर से दूर रहें, तभी हम मन के पार जा सकते हैं। ऐसा जय कृष्णमूर्ति की किताब मेरे प्यास एक है, ध्यान में मन, ये किताब है और इसमें बहुत विस्तार से इस बात को कहा गया है। मैंने इसका अध्ययन किया था, जब मैंने देखा ये इस पर वार्ता हो रही है तो इसमें मुझे ये जो बात समझ में आई उसको मैंने शेयर करा आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान में मन, इतना खूबसूरत शीर्षक है इस किताब का। हाँ जी वसुमती जी, कहिए। हाँ, सर्वप्रथम तो इतना अच्छा विषय चुनने के लिए तरल भाई जी आपको और हमारे जो स्पीकर्स हैं राउत जी हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने प्रस्तुति करी। और शिंदे जी बोल तो मराठी में रही थी लेकिन वो पूरी तरह से समझ में आ रहा था मुझको। और अर्चना जी हमेशा की तरह भाई, उनकी आवाज में जो एक जीवंतता है और जो खनक है उसकी तो क्या ही बात की जाए। कुल मिलाकर विषय मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। और वो जो कोट किया था, दो चीजें चाहूंगी, राउत जी ने बताया था ना कि नीरव नाथ को एक सूत्र है ना कि मन ही सत्य का परम हंता है और साधक को चाहिए इस हंता का हनन करे। हनन करे कैसे, मतलब बहुत क्या, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया शंकराचार्य जी का माध्यम से, जो डिजायर्स और डिजायर्स के पीछे भागते आदमी, वो उनका प्रतीक और उदाहरण बहुत अच्छा लगा। कुल मिलाकर मन प्रसन्न हो गया। तो मैंने कहा कि सबको बधाई दी जाए, बहुत बहुत बधाई इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। जी बहुत सबको प्रणाम, बहुत बधाई। बहुत आप आई, जुड़ी, आज मजा आ गया। हाँ आभा जी कहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द 3 स्पीकर्स। आज बहुत अच्छा रहा, लेकिन मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम थी। मेरा एक और सेशन चल रहा था जिसमें मुझे बोलना भी था। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो अर्चना जी का चल रहा था और अर्चना जी ने वो जो बताया कि मालिक और गाय वाली जो उदाहरण दिया कि जो पीछे पीछे भाग रहा है, वस्तुतः हम लोग देख नहीं पाते। तो ऑल वी हैव टू बी इज उस एब्स्ट्रैक्ट को जाने, जो कंक्रीट है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन, नॉलेज ओनली। लेकिन वो जो उसके पीछे छिपा हुआ है, जिसको हम परा कहते हैं, जो गीता में भी कहा गया है, उसको देखें तो वाकई यही होता है कि हम बेसिकली भाग रहे हैं, हम अपने को मालिक समझ रहे हैं लेकिन हम लोग मालिक नहीं।
भाग रहे हैं किसके पीछे, विशेष के पीछे। तो ये अंतर में जाने की बात है मेरे हिसाब से, इनवर्ट जिसे कहते हैं, अंदर में जाके। और ये सब चीज पॉसिबल है थ्रू मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन में ही ये इन सब चीजों का ज्ञान होता है। स्वाध्याय भी जरूरी है, लेकिन मेडिटेशन उस चीज की अंडरस्टैंडिंग लाता है, ऐसा मेरा अब तक का अनुभव। तो बहुत ही अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू अर्चना जी, नंद कुमार जी एंड आशा जी, आप तीनों बहुत बधाई के पात्र हैं। आप तीनों को मेरा नमन, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अन्य वक्ता कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे या बोलना चाहे? आपको कुछ शेयर करना है अर्चना जी, आशा जी या नंद कुमार जी? नंद, मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलो। नंद कुमार जी का ट्रांसलेशन जब भी होता है ना, तो इतनी सरल शब्दों में वो इतनी अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, और वो जो एग्जाम्पल इम्प्रॉम्प्टू देते हैं ना, उसमें बहुत जैसे जैसे समझ में आता है। और आशा जी, आपकी मराठी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से आपने कहा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा लगा। चूंकि मैं मुंबई कर हूँ तो मुझे मराठी प्यारी है। बहुत सुंदर आप बोले, थैंक यू। अन्य कोई? नागेंद्र जी हैं, दुबल जी हैं, माधवी जी, उमा कुलकर्णी जी, राज भाई, ब्रिजपुरिया जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? कैसा लगा आज? नहीं, मेरे ख्याल से वो नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल से किसी को कुछ प्रश्न न हो। आज शिंदे जी की मीटिंग है वाराणसी में, इसलिए वो नहीं आए। और वहाँ का Tarun ji, जो Tarun ji, जी 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 जी, may I add few words? यस सर, प्लीज गो अहेड। Yes, in the voice of the silence, we can learn that mind is the slayer of the real. Let the disciple slay the slayer. So, Nandakumarji in his talk clearly explained, it is not killing the mind or destroying the mind. Mind has its own usefulness. Memory has its own use. But when we become slave or just like an uncontrolled work destination, it's a serious problem. So, by observing the mind, that was Krishnaji's point, I think, by the thoughts. Buddhism also, some methods are there, but Krishnaji, his method is observe the operations of the mind, which always deceive you. As per that, conditioning is very much influence us. When we see a person, a black or a white, thousands of thoughts jump into our mind, and we reach into some conclusions. Whether we see a tree, a bird, or an insect, whatever it may be, these operations of the mind, we should be aware. Be aware, simply aware. Krishnaji once said, we need not teach people anything. Make them aware. For example, when somebody says to us, there is dirt on your face, we immediately go and wash the face. Just like that, we need not teach them anything, or we may not try to proselytize them into some faith or some religion, but make them aware their own conditioning, their own limitations. That was Krishnaji's point. Another point I would like to say about the relationship between the Theosophical Society and Krishnaji. When JK dissolved the Order of the Star in the East, it was a surprise to many people. But the only person who was not surprised by that action was Dr. Anniebesant, who said, yes, it was only a temporary arrangement, this
Order of the Star in the East to welcome K or Krishnamurti. And it is up to him to dissolve that organization, just like a reception committee is over when that function is over. Then the world teacher or K will decide what to do next. We are not the persons. But Theosophical Society is a permanent organization which has its own 3 declared objects and programs. But Order of the Star in the East was only meant Sir, your voice, welcome Krishnaji. your voice is coming and going, sir. This world to remove some practical signal problems. So their relationship between Anniebesant and Krishnaji was just like mother and child. They were so close. When Dr. Besant was in her last days, Krishnaji visited her IR and spoke to her. There's a wonderful relationship. Many people thought that when Krishnamurti dissolved the Order of the Star, it was the end of the Theosophical Society, because it cannot be, because Theosophical Society was founded by the great ones for a definite purpose. Yes, and sir. Order of the Star was meant for welcoming Krishnaji. And it was proved beyond doubt that the discovery of Leadbeater and Anniebesant was true. Thank you. Thank you, sir. I think Kishwarji is there. Kishwarji, kindly start your video. If there are no other questions, we'll proceed for the end of the program. तरल जी बोलिए। हाँ, अभी जैसे दिनकरन सर ने बताया कि कृष्णमूर्ति जी ने जो ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट डिसॉल्व किया, तो कुछ लोगों ने एनीबेसेंट को सवाल किए कि क्या हो गया ये ऐसा, क्यों छोड़ा, क्यों उन्होंने डिसॉल्व किया। तो एनीबेसेंट ने ऐसा आंसर दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने छोड़ा, थियोसॉफिकल छोड़ी, ऑर्डर ऑफ द स्टार डिसॉल्व किया, तो आपको सरप्राइजिंग नहीं लगता? तो एनीबेसेंट ने जवाब दिया कि अगर छोड़ते नहीं थे तो मुझे सरप्राइजिंग लगता। जैसे उन्होंने छोड़े तो मुझे सरप्राइज नहीं लग रहा, अगर नहीं छूटी रहती थी थियोसॉफिकल सोसाइटी या ऑर्डर ऑफ द स्टार अगर डिसॉल्व नहीं करते थे तो मुझे सरप्राइज होता था, अदरवाइज नो। और क्योंकि ये ऐसा है कि उस समय देयर वाज नो नीड ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, उनका डेवलपमेंट ऐसा हुआ था। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, फिर स्कूल छूट जाती है, स्कूल पूरा होने के बाद में फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर कॉलेज छूट जाता है, वैसे ही उनकी जो विकास हो गया उनका, तो वो विकास के लिए कोई बंधन आवश्यक नहीं था, थियोसॉफिकल सोसाइटी आवश्यक नहीं थी। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ द स्टार, दैट वाज आल्सो नॉट नीडेड टू हिम, इसलिए उन्होंने वो छोड़ी नहीं। वो उनका कहना ऐसा था कि कोई गुरु नहीं मेरा, मैं किसी का गुरु नहीं, मेरा कोई शिष्य नहीं है, और उनका विकास ही ऐसा हुआ था कि उनको वो छोड़ना पड़ा। Yes. Okay. Thank you. ये एक AI कंपेनियन है यहाँ पे, जो थोड़ा सा समय है, तो मैं चाह रहा था कि उसको आजमा लिया जाए। तो ऐसा कहना है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। तो वी कैन आस्क क्वेश्चन टू AI companion what it has to say about going beyond mind, explained by JIDDU KRISHNAMURTI in some word.
No, I don't think it is on. Okay, we'll try later on. So let us move towards end, and Atulji, go ahead. કેશવબેન આપણને શિવમ નું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવબેન, આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहम् न कर्णं न जिह्वा न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्यु न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्
Thank Wow. you all.